Okay, I think again something happened and the video got disconnected. I apologize for the technical inconvenience, which I don't know what happened. So I think I'll again wait for a couple of minutes so that more people can join in. Thank you for your patience because I'm not understanding what's happening, and I'll request the organizers to look into it. Even though I don't know if it's at their end or not. Okay, so continuing where we left off. So as an audience, when you watch a movie, so we were taking an example of Bhoot, which is of Dharma Productions. So आप जब मूवी देखते हो तो आपको सबसे पहले तो मैंने बताया प्रोडक्शन कंपनी आता है, उसका रोल क्या होता है, उसी ने सारे ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट किया होता है, जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बैकग्राउंड आर्टिस्ट्स के साथ. तब आप देखते हो कोई एक लीगल डिस्क्लेमर आता है ना. आपको लगता होगा कि ये लीगल डिस्क्लेमर के तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दैट दिस मूवी इज प्योरली फिक्टिशियस, resemblance to any character dead or alive is purely coincidental. But let me tell you that the role of the in-house counsel comes here because it's not necessary that the set format will be applicable to every project of the production company. For example, if any movie is more politically driven, or it's on one particular social issue, or it is more religiously driven, then you have to take care to include those particular terminologies in the disclaimer, ताकि एक एयर टाइट डिस्क्लेमर हो, ताकि फ्यूचर में कोई लीगल क्लेम आपके प्रोडक्शन कंपनी के अगेंस्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, the makers of the movie do not intend to harm, defame, or offend any beliefs or religious sentiments of any community, creed, caste, sex, etc. So yes, so that is again another role of the in-house counsel, to watch the entire movie before the theatrical release and understand what is the requirement of the disclaimer. This is a very brief पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द इन हाउस काउंसिल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब आप आगे कोई मूवी देखते हो तो आपको ओपनिंग क्रेडिट्स दिखते हैं, राइट? आपको लगता होगा कि ठीक है, सबका नाम है, लिस्ट में डाल दिया, ओपनिंग क्रेडिट्स हो गए. अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट दैट इजी, बिकॉज कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे अगर किसी भी एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ, तो वहां पे अक्सर एक क्रेडिट्स क्लॉज होता है. Now, this credit clause has a standard format, but still, sometimes because of the requirements of the particular actors or because of internal discussion of the production company, it has to be customized accordingly. Now, all these negotiations are again done by the in-house counsel, because sometimes, I'll give you an example. Sometimes a director can say कि मेरा नाम अकेले होना चाहिए, director Mr. A. It should not be shared with writer Mr. B. So yeah, that is again one of the demands of one party, but it is subject to internal discussion of the production company, and these negotiations are done by these in-house counsels. Now moving forward, तब आप मूवी देखते हो, उसमें डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, हर एक्टर के साथ एक अग्रीमेंट होता है, और अग्रीमेंट का एक सेट फॉर्मेट होने के बावजूद काफी कस्टमाइजेशन करने पड़ते हैं. आफ्टर लॉट्स ऑफ नेगोशिएशंस, इफ दे आर एन ए लिस्टेड एक्टर, देन दे हैव मोर रिक्वायरमेंट्स. सो अकॉर्डिंगली आपको ऐसे ही चेंजेस करने पड़ते हैं. सो एज अ व्यूअर जब आप मूवी देखते हो तो आपको पर्दे पे ये सब काम जो पीछे चल रहा है समझ नहीं आता है, which is done by the in-house counsel. Now this is from the practical point of view. Now I will discuss the legal provisions which are applicable with respect to media law whenever you watch a movie. So I hope all the people who are from background of law or even pursuing law and even in their junior batches, they must have seen a simple format of an agreement. और इवन आपने नहीं देखा है कोई अग्रीमेंट, आपको कोई भी चीज समझ ना आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. आई विल ट्राई टू यूज एज सिंपल लैंग्वेज एज पॉसिबल एंड नॉट मच लीगल जार्गन, ताकि आपको इजिली समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ. सो व्हेन यू वॉच, when you see an agreement, usually ऊपर क्या होता है, पार्टीज के नेम होते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डायलॉग राइटर्स अग्रीमेंट. मैं आपको बताती हूँ कि लीगल प्रोविजंस मीडिया लॉ में कैसे एप्लीकेबल होते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है जानना बिफोर एंटरिंग द फील्ड ऑफ मीडिया लॉ. सो लेट्स से इट इज अ डायलॉग राइटर्स अग्रीमेंट. तो पहले क्या होगा, ऊपर पार्टीज नेम होंगे, लेट्स से ABC लिमिटेड विच इज द प्रोडक्शन कंपनी एंड मिस्टर एक्स विच कुड बी द डायलॉग राइटर. इसके बाद रिसाइटल क्लॉज आते हैं कि वेयर एज ABC लिमिटेड इज अ फेमस प्रोडक्शन कंपनी इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मिस्टर एक्स इज अ फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड डायलॉग राइटर इन द इंडस्ट्री, ही हैज बीन देयर फॉर मेनी ईयर्स. तो ये सिंपल लैंग्वेज होते हैं, इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, यू कैन मेक चेंजेस इन दैट. बट द अनदर इंपॉर्टेंट क्लॉज विच इज द फर्स्ट क्लॉज एक्चुअली इज द डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस क्लॉज. नाउ अगर आपने कोई अग्रीमेंट देखा है
तो आपको पता होगा कि बेसिक डेफिनेशंस जो कॉमन होते हैं हर अग्रीमेंट में क्या हो सकते हैं. जैसे अग्रीमेंट का डेफिनेशन, that agreement is the entire agreement including all the annexures, amendments to the agreement, addendums, etc. Then act define हो सकता है कि act means the entire copyright act including the copyright rules, because repetitive हो जाता है बार बार आप copyright act, तो ये सब तो हो गया to make it more crisp and precise. Now I would like to raise this question to the viewers कि आपके हिसाब से और क्या definitions होने चाहिए. Now I'll give you a hint. बिकॉज आप जब अलग अदर पार्टी के साथ अग्रीमेंट करते हो, दैट पार्टी इज नॉट एज लीगली साउंड एज यू आर, सो यू ट्राई टू मेंटेन एंड रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डेफिनेशंस ओनली टू द टर्म्स विच आर रेलेवेंट टू योर अग्रीमेंट. अगर डायलॉग राइटर्स अग्रीमेंट है तो आप म्यूजिक कंपोजर डिफाइन नहीं करोगे, बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट. सो आप मीडिया लॉ से नहीं हो, आई अंडरस्टैंड, but if you want to just run your brain and just brainstorm कि और क्या क्या definitions हो सकते हैं, so you can please write in the comment section. It can be wrong, it can be correct, don't hesitate, but what could be the other terms which should be defined in a dialogue writers agreement? So let's see, I'll just wait for 30 seconds so that we don't waste much time also. So what do you think, what could be the other terms which should be defined in a dialogue writers agreement? Let's see. I've already told you agreement होना चाहिए, act होना चाहिए, obviously dialogue तो defined होना चाहिए, because that is the one thing which is being given by the dialogue writer. Dialogue क्या होता है? Also, it's okay if you don't understand, it's fine, don't shy away, you can write anything what you want to. So I'll tell you, dialogue defined होना चाहिए, script defined होना चाहिए, screenplay defined होना चाहिए. So I'm just giving an example of a particular kind of agreement. This is not universal. हर agreement का अपना set of definitions होता है, but term, territory, ये सब बहुत ही intellectual property law के specific terms हैं जो आपको पता होना चाहिए. Like term क्या हुआ? Term of the copyright. Like if it's a literary work, if you're giving the script or you're giving the dialogues, so that dialogues will have, it is a work in which the copyright will subsist for 60 years, right, after the year of publication. So ये हो गया term of copyright. Territory, किस territory में आपका copyright आपके पास होगा, protection होगा. It is usually the world or the universe, depending on the language which is generally used by the production company. If I'm being too technical, please tell me, I'll just try to simplify my language, okay? So ये तो हो गया definitions clause. इसके बाद आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज पे जिसपे लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. वो हो गया हमारा स्कोप ऑफ सर्विसेज. अब स्कोप ऑफ सर्विसेज में ब्रीफ पॉइंटर्स क्या होंगे? स्कोप ऑफ सर्विसेज हो गया जैसे कि सिंपली व्हाट इज द पीरियड ऑफ द अग्रीमेंट. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑफ द अग्रीमेंट एंड पीरियड ऑफ द अग्रीमेंट. People who are aware of IP law, you should be knowing this basic thing. It's very important that period of the agreement is the period for which the dialogue writer is hired to perform his services. Yes, from this I also remember services must be defined. Otherwise, वो कुछ भी services दे देगा and you can't say. Yes, thank you Devashish Mishra. Yes, script must be defined. I'm happy that by and by you're all coming along and brainstorming. It's good. Also, हम scope of services की बात कर रहे थे. तो scope of services में आप पहले बताओगे period of agreement क्या है. Let's say it could be 6 months from the execution date. कि आपको 6 महीने के अंदर dialogues लिख के दे देना है. Now, what is the execution date? Okay, thank you, Nitika Satya. It's a very insightful question. What is the difference if some production house uses world and another house uses universe to define territory in their agreement? So yes, so I had raised actually the same question when I was interning in Tips Industries Limited. So I'll tell you why. So as an in-house counsel or as any lawyer, you should be quite far-sighted. So today we know that that there are particular types of technology, particular countries in this world. I know it might sound hilarious, but we have to think too ahead of our times. So if let's say tomorrow there's another planet, we are already going to moon, we are already going to Mars. So let's say if you're sending a land rover to Mars or moon and you want to play that particular song which belongs to Tips Industries Limited or T Series, तो आपको उसके rights लेने होंगे कि नहीं? So you should always make sure that your territory is universe and not world.
If you're not that far sighted, then it's fine. You can keep the territory restricted to word. It is just to make it as airtight as possible and just to safeguard the interests of the producers as much as possible. It was a very good question, and it's quite interesting to know this also. I had also raised the same question, then I got to know about it. Okay. So, okay, there's another question. मीडिया लॉ क्या होता है, हमें इस लॉ की जरूरत क्यों होती है, मैम प्लीज डिफाइन. So yes, so for those people who could not listen to my previous things that I have said because of so many interruptions, technical interruptions that happened, I'll explain you again. So media law is something which is limited to entertainment industry, but it is quite diverse in its own. The basic roots are intellectual property law and the basic tenets of Indian contract law. सो जो भी मूवी आप देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, म्यूजिक एल्बम आप देखते हो, पर्दे के पीछे उसमें काफी लीगल कंप्लायंस एंड लीगल वर्क की जरूरत होती है. तो वो काम एक इन हाउस काउंसिल करता है या फिर कोई मीडिया लॉ फर्म को आप आउटसोर्स करके उनसे करवा सकते हो. जैसे कि मैंने अभी एक अग्रीमेंट का एग्जांपल आपको दिया था कि काफी क्लॉजेस उसमें होते हैं, आपको हर एक्टर डायरेक्टर के साथ अग्रीमेंट करना होता है, कोई सेट फॉर्मेट मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि सबके अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो वो एक इन हाउस काउंसिल करता है. सो मीडिया लॉ, इफ आई स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देन वी आर कंसिडरिंग द रोल ऑफ एन इन हाउस काउंसिल. प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री फिर अलग हो जाता है. तो मीडिया लॉ इज स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री बट डाइवर्स इन इट्स ओन. So that is a crisp answer that I can give you as of now. Because of the paucity of time, I can't emphasize on that more. Okay, the next question is, ma'am, does the dialogue agreement include definition of actor or actress or an individual? So, thank you, Shubham. It's a nice question. So, it's not necessary, I would like to say, that usually film is defined. Film is defined because कल होके वो डायलॉग राइटर बोल सकता है कि मैंने किसी और प्रोजेक्ट पे काम किया था, एंड उस फिल्म में व्हेन इट इज डिफाइंड इट कुड ईदर बी करेंटली अनटाइटल्ड इफ देयर इज नो टाइटल ऑफ द फिल्म येट, और फिल्म टाइटल्ड XYZ starring actors this and the other side actors. Usually we write like that because, as I told you, the person who is the other party is not as legally sound, and if we make the agreement lengthier, then they might lose interest in reading everything, and tomorrow they can come and they can have a legal claim against us कि हमें तो समझ ही नहीं आया, आपने इतना लंबा agreement बना दिया. Even though that is not a very sound legal argument, still we should try to limit it and restrict it to the relevant terms which are required. And as any reasonable, prudent man, actor and actress or an individual is kind of clear. So agreement is not a document which is presented in a court of law every time. It is only when a legal dispute arises that we need to present it. So it is for the mutual understanding of the parties. So जब आपको पता है कि actor and actresses क्या होते हैं, तो it is not required. So I hope I'm making myself clear enough. So so continuing with the scope of services, मैंने बताया था कि scope of services में आप बताते हो period of agreement. Period of agreement हो गया, उसके बाद बहुत important आता है Section 17 of Copyright Act. Now, Section 17 of Copyright Act talks about the ownership and the authorship of the work. Now, this is again very technical terms specifically under the purview of Copyright Law of India. Can anybody tell me from the viewers what could be the difference between an owner of a work and an author of a work? It is defined in the Copyright Act. I'm just asking you to engage you as much as possible. If you have any clue, you can just write in the comment section. I'll just wait for 20 to 30 seconds. अगर आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो कि कोई काम मैंने किया है, एक डायलॉग राइटर ने डायलॉग्स लिखे हैं, तो उसका ऑथर कौन होगा और उसका ओनर कौन होगा. इफ एनीबडी कैन जस्ट राइट, डोंट हेजिटेट प्लीज, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. It's quite easy. You just have to go with the literal meaning of both these terms. Literally आप क्या मीन करते हो ओनर को और ऑथर को. You're welcome, Shubham. I hope I was clear enough. So, okay, I'll continue with the difference between an owner and an author. So, owner is a person who has the ownership rights. I'm telling you, it's very literal. आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है. Author is the person who has created the work. He may or may not be the owner of the work. Owner is the one who owns the copyright in that work.
Now, why is there a difference? Why is there a need of such difference? I'll tell you. So, as per Section 17 of Copyright Act, if you are the creator of a work, you're sure shot the owner, as per the definition of author. Sorry, you're sure shot the author. But if you have created that work in the course of employment at the instance of the production company, then the first owner would be the production company because he is your employer. But if you are an independent contractor, then you have not done it in the course of employment. बस एक agreement के तहत आपने वो काम किया है, इसीलिए आप first owner होंगे, author भी होंगे, और अगर आपको वो मूवी देनी, अपनी स्क्रिप्ट देनी है ताकि वो मूवी में अडेप्ट की जा सके, then you will assign your rights in that dialogues to that particular person, to the production company, and the assignment of rights will happen under Section 18 of the Copyright Act. If I'm being too technical or if I'm being little complex, just tell me. I'll explain again. अगर आप सेक्शन 17 के अंदर आपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है तो आप फर्स्ट ओनर नहीं होगे, आप ऑथर होगे. फर्स्ट ओनर होगा आपका एम्प्लॉयर या प्रोडक्शन कंपनी. और अगर आपने इंडिपेंडेंटली किया है तब आप असाइन करोगे अपने राइट्स under Section 18 to the production company, and you will be the first owner as well as author of that work. I can see a couple of questions have popped up. So if the writer sells his copyright, then he is not the owner, I guess. Yes, you're completely right, Nitika. So I would like to tell you that in the copyright language, we use the word assignment. So if you have created the work, you are the author. And then if you have created the work not under any employment, then you will be the first owner. But कल होके अगर आप assign कर देते हो, आप भले first owner थे, right now you will not be the owner. You will be the author, but now जिसको आपने assign किया है, जिसने acquire किया है आपके copyright को, that person will become the owner of the copyright. I hope I am clear. Yes, Devashish, completely correct. He has written that first owner is author but can be transferred to different owner. Yes. I hope you are making myself clear, and I'm happy that you're all also understanding what I'm trying to tell you. So yes, so that is what the scope of services would entail. That is the period of agreement, and whether you have done it in the course of employment, whether you're the owner or author. Actually, the language is different, but I'm trying to tell you in the layman's language as much as possible. Then moving forward, then there will be another important clause which would be assignment of rights clause. Now, assignment of rights clause, now let me tell you, the title of the clause does not matter. The intent should be clear. कुछ agreements में आप देखोगे ownership of rights clause, कुछ में आप देखोगे intellectual property rights clause, कुछ में आप अलग-अलग चीजों को देखोगे. तो simply it means assigning the rights which I've already explained under Section 18 of the Copyright Act. Then further आप बहुत सारे clauses होते हैं. अगर मैं सबको डिटेल में बताने लगी तो काफी टाइम लगेगा. So I'm restricting myself to those clauses which are related to IP law. So up till now, whatever I've told you, if you have any confusion, any doubts, you can please write in the comment section. Am I making myself clear? I hope I am. Should I continue? You can write. I can continue with my further things. Okay, I think I should continue. Also, if I can start the question and answer round, and I can just continue with my topics later on so that it can become more interactive. So if anybody has any questions related to anything in media law, you can just put your questions here so that I can cater to that. If anybody has any question related to media law, you can just write it. I'll just wait for the next 30-40 seconds. Thank you, Aprajit. Okay. I can see one question has popped up. Siddharth has written that whether an author loses his right to get credit in the movie after assignment of ownership rights to the producer. It's a very good question considering we were just talking about it. So I will tell you that no. As I've told you that when you create a work, you become the author. You're already the author. You might or might not be the owner of that work. But even though if you have assigned your rights of the ownership in that work to any production company, you will still be the author of the work. That right nobody can take that right from you. And this is related to Section
57 of the Copyright Act, which is moral rights of the author. मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी मॉरल राइट्स ऑफ एन ऑथर क्या होता है. अगर आपने कोई काम किया है, आपने उस काम को बेच दिया, पर वो काम आपने किया है, ये होता है राइट ऑफ पैटर्निटी. राइट ऑफ पैटर्निटी हुआ कि आप किसी को भी काम देते जाओगे, वो पर्सन किसी और को देगा, वो पर्सन किसी और को असाइन कर देगा, बट यू वर द फर्स्ट क्रिएटर, so you have a right to get credit in the movie. Sometimes what happens, like it happened in the movie Chhapak. So what happened, the counsel who fought the case for Lakshmi Agarwal, so she was not given credit in the movie, even though the script maker had gone to her and discussed the script with her as to what arguments she had in the case for acid attack. Now what happened, she did not have any agreement with the makers of the movie कि उसे credit दिया जाए. नाउ यहाँ पे बट उसने अपना आर्ग्यूमेंट्स बताए थे, उसका कोई अग्रीमेंट नहीं था. द मेकर्स वर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू गिव हर क्रेडिट, बट सिंस उसने बताया था, शी वॉज द क्रिएटर ऑफ दोज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, इवन दो इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फैंसियर वर्जन बाय द स्क्रिप्ट राइटर लेटर ऑन. स्टिल कोर्ट ऑफ लॉ ने ये जजमेंट दिया कि इवन दो देयर वॉज नो ऑब्लिगेशन, शी हैज द राइट टू इनकॉर्पोरेट हर क्रेडिट इन द मूवी. ये तो बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल हुआ. अगर आप कोई स्क्रिप्ट राइटर भी होते हो और आपने असाइन कर दिया अपने राइट्स को प्रोडक्शन कंपनी को, कल को प्रोडक्शन कंपनी आपको नहीं कह सकता है कि आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे बिकॉज अब हम ओनर होते हैं, बिकॉज यू हैव द मॉरल राइट्स irrespective of assignment of rights. That is what section 57 talks about. So yes, moving forward to the next question. What changes do you believe are taking place in the field of media law owing to COVID-19? Okay, so yes, this is quite interesting because that is what we are going through right now. It's not just media industry, even the railway sector, the government sector, whatever we look at are going through various changes because they have to accommodate and adapt themselves to going through the inevitable pandemic. So yes, when we talk about what is happening in the media industry, हमारे आंखों के सामने अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग चीज हो रही है बड़ी, जो हम देख रहे हैं, वो है गुलाबो सिताबो का रिलीज, which was scheduled on June 12 for theatrical release. Now it is being released on Amazon Prime Video. Similarly, Shakuntala Devi starrer, which is starred by Vidya Balan, and upcoming Tamil, Telugu and Kannada movies are also being released on OTT players, OTT platforms like Netflix or Amazon or Hotstar, etc. Now this is a great shift when it comes to Bollywood industry or even the Indian industry and all, including the regional industries, because ऐसा पहले हुआ नहीं है. पहले क्या होता था कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स आते थे, Amazon प्राइम वीडियो ओरिजिनल्स आते थे, तो उनको कॉपीराइट एक्ट के तहत सिनेमेटोग्राफ फिल्म में काउंट ही नहीं किया जाता था. बिकॉज व्हाट हैपेंस, द सिनेमेटोग्राफ फिल्म एक्ट ऑफ 1952, they do not include those movies still which are being directly released on these OTT platforms. तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि अब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC जो लाइसेंस देता था, जो सर्टिफिकेट देता था कि वो अडल्ट है या UA है या U है या स्पेशल है, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है उन मूवीज पे जो कि डायरेक्टली रिलीज हो रही है इन OTT प्लेयर्स पे. तो इससे क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? सो फिलहाल तो वी कैन ओनली गेस. बीइंग अ पर्सन फ्रॉम द एरिया ऑफ मीडिया लॉ, आई कैन से दैट राइट नाउ, because of the laws which are existing, I don't think so that certification is required right now while releasing on these OTT players. But if if the producers want to release it later on television, जो आप देखते हो ना वर्ल्ड वाइड टेलीविजन प्रीमियर, कल को गुलाबो सिताबो के राइट्स वायाकॉम 18 ने ले लिए फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, लेट्स से कलर्स पे उन्हें डालना है, तब क्या होगा? अब मैं बताती हूँ, क्योंकि टेलीविजन पे अगर आप कोई मूवी डाल रहे हो तो आप प्रोग्राम कोड के तहत रेगुलेट होगे. नाउ व्हाट इज दिस प्रोग्राम कोड? दिस कम्स अंडर केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क्स एक्ट. अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है कि अगर आप कोई मूवी डाल रहे हो तो फर्स्टली इट शुड नॉट बी अडल्ट कंटेंट, शुड नॉट बी ए सर्टिफाइड, बट इट शुड बी सर्टिफाइड बाय CBFC. अब क्या होगा? पहले तो सर्टिफिकेट नहीं लिया ऑन while releasing it on Amazon Prime or Netflix, but now if you have to release it on television, you need the certificate. So that is the legal dilemma which I think the media industry will go through, and then they might have to opt for the certificate. So let's see what happens on June 12 when Gulabo Sitabo is released. Then these confusions would be clarified, I believe. Okay, so moving on.
One party to the agreement is always the production house. I believe, yes. So, as I told you, that producer is the person who initiates all the transactions. So, if he is directly hiring any actor, director, तो एक तो party होगा production company. But I'll give you an example where, so okay, I'll explain what actually happens in the media industry. आपने कोई मूवी देखी, लेट्स से चलते चलते आपने देखा, चलते चलते में आप गाने सुन रहे हो, अब वो गाने आप समझते होगे कि वो गाना कोई और म्यूजिक लेबल का होता है. जैसे जवानी जाने मन अभी आई थी, जवानी जाने मन पूजा एंटरटेनमेंट की मूवी थी, बट उसका म्यूजिक लेबल कौन था? टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आई विल टेल यू. Now, generally, the music label company is the one which releases the music, even though the movie belongs to another production company. Why? Because there is a transaction between the production company and the music label company कि आप मेरे फिल्म के लिए म्यूजिक बनाओगे. अब ये म्यूजिक लेबल कंपनी फर्दर करता है, म्यूजिक कंपोजर्स को हायर, सिंगर को हायर, लिरिसिस्ट को हायर, वो म्यूजिक बनाते हैं एंड देन दे असाइन द राइट्स बैक टू द प्रोडक्शन कंपनी. सो वो सब अग्रीमेंट्स जो सिंपली म्यूजिक अग्रीमेंट्स होंगे, उसमें प्रोडक्शन कंपनी नहीं होगा, उसमें म्यूजिक लेबल कंपनी होगा. म्यूजिक लेबल कंपनी एंड द म्यूजिक कंपोजर, उनका अपना सेपरेट सेट ऑफ म्यूजिक अग्रीमेंट्स हैं. And all those cumulative rights are then assigned back to the production company. So yes, these are the examples where the production company is not involved. So so in these kinds of circumstances, the other party might not be the production company, but generally, since all the transactions are initiated by the production company, तो production company हो सकता है एक party. Thank you everybody for encouraging me. Okay, so I believe all the questions are catered to. If any other question is left, you can just tell me. I can adhere to that as well. If anybody has any other question. Okay, so while we're talking about what the current scenario is in the pandemic, we can also discuss a few of the current things that are happening. So अभी आपने देखा एक Netflix ओरिजिनल आया है of Red Chillies Entertainment, बेताल. अब बेताल आपने सुना है, देखा होगा, पसंद भी आया होगा, but again there is a legal conundrum behind it. I will tell you what. So there was a case against this Netflix original. It was against Red Chillies Entertainment, stating that there is a Marathi feature film which is not yet released, but एक script registered था with the name of Vetal. Vetal. So it was registered with the Screenwriters Association of India, and they claimed कि उन्होंने इस स्क्रिप्ट के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर दिया है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जो एज अ नॉर्मल व्यूअर वी डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द रोल ऑफ द एंटरटेनमेंट लॉयर. दे गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे फाइट इट. So there was another case of Bala that it had infringed the copyright of a script called Wig. Then फैन ने अगेन इन्फ्रिंज किया था एक दूसरी मूवी को जिसका नाम था अभिनेता. सो ऐसे बहुत सारी मूवीज आती रहती है जिसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के केसेस होते हैं. तो उसमें एक केस लॉ है जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म्स, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड नो दैट there is no copyright in any idea or theme. There is always copyright in the expression of the idea. How you express it. You can express it in the form of cinematograph film. You can express it in the form of simply an advertisement. So if your expression is hubahu similar, it is, exact imitation of that expression of that movie, then you can claim for copyright infringement. So RG Anand में यही explain किया गया है कि अगर same plot या theme पे बनाया गया है दो movies, then similarities are bound to happen. But if there are equally dissimilarities available in both the movies, then you have to look at that as well. Dissimilarities को आप negate नहीं कर सकते हो, वो भी आप देखोगे. साथ ही सिर्फ similarities नहीं, substantial similarity होना जरूरी है. अब रामायण पे बहुत सारी टीवी सीरीज, वेब सीरीज आ जाएंगे, कल को मूवीज आने लगेंगी, ऑलरेडी एनिमेटेड मूवीज हैं. अब आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे, माइथोलॉजिकल फैक्ट्स पे कॉपीराइट कर नहीं सकते हो, बट स्टिल इफ योर एक्सप्रेशन इज कॉपीड, देन यू कैन आस्क फॉर प्लेजरिज्म. लाइक, एंड ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस केस में ये भी लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ व्यूअर
from the perspective of an audience, if it is similar, then also it can be copyright infringement. बिकॉज सिर्फ प्रोड्यूसर या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो खुद में उसको फील हो सकता है कि हाँ इन्फ्रिंज कर दिया है, बट ऑडियंस को भी लगना चाहिए. सो यस, so that is all the legal arguments which can be presented by the entertainment lawyer if he wants to defend if there are any similarities in two movies. So I think I'm done with the time which was allotted to me. Despite the interruptions, we have covered that much time, and I would again like to, if there are any questions left, you can just quickly ask them. Then I can conclude my session. Let me know if there is any other question. कुछ भी अगर आपको लगा कि ज़्यादा टेक्निकल हो गया था या फिर बीच में ही छूट गया था, आपको समझ नहीं आया, यू कैन जस्ट आस्क मी राइट अवे. आई एम ऑल्सो, इफ यू नीड एनी हेल्प इन मीडिया लॉ, यू कैन पिंग मी ऑन माई पर्सनल प्रोफाइल, or you can contact Manthan India Summit. They can tell me the questions that you have even later on in life whenever you need any help. So yes, as the founder himself has told me to continue, and I think I should conclude the session. So again, I would like to thank Abhineet, Ajit, Devashish, Shweta for inviting me, making me a part of Vritant, a wonderful live session. It was quite interactive. You were a wonderful audience. बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके. And so I would request you all to please follow Manthan India Summit for more updates regarding more wonderful initiatives that they would be doing in future. Keep it up guys, you're doing really good job. Manthan India Summit को आप प्लीज फॉलो करें, उनके पोस्ट्स को देखते रहें, आगे भी आए तो आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहें. और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी सभी को वापस से ईद मुबारक, और आप लोग जरूर मंथन इंडिया समिट को फॉलो करें. Or stay home, stay safe. The world outside is really dangerous right now. So please stay at home. And namaskar. Thank you so much.